ये हम पोलिंग स्टेशन के अंदर आ गए। एक बोरिंग किस्म का सुकून आप देख रहे होंगे और ये अंदर इधर पोलिंग हो रही है। Remember you from last year? Oh, do you? I think so. Yeah, I was here. Get that picture. Fill it out. Fill in the voting form. Fill it on the form. All right. Once they get done with that, they come over here. And they turn it into the machine. And that's where they stick their vote in. Okay. Just right in here. And this would tabulate it. All right. So this is the voting machine. Correct. All right. But this is a paper vote? Yep. All right. So all papers go in there. Okay. And it's going to count them. And at the end of the day, अस्सलाम वालेकुम, बैरिस्टर एहतेशाम अमीर-ud-Din आपकी खिदमत में हाजिर विद न्यू वीलॉग। अमेरिका में तकरीबन रात के 2 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एज प्रेसिडेंट इलेक्ट अपनी विक्ट्री स्पीच ख़त्म किया। मैंने वो सारी स्पीच सुनी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा वो मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीलॉग में। और उसके अलावा अमेरिका में इलेक्शन का जो माहौल है, इस वीलॉग की ख़ास बात यह है कि आपको वो इलेक्शन का माहौल अमेरिका के पोलिंग स्टेशंस का देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में इलेक्शन डे किस तरह का होता है, पोलिंग स्टेशंस का माहौल क्या होता है, उससे तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन अमेरिका में वोटिंग किस माहौल में हो रही होती है, पोलिंग स्टेशंस का माहौल क्या होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं 2 पोलिंग स्टेशंस पर गया था और वहाँ पे जो चीफ ऑफिसर्स जिनकी सुपरविजन में वोटिंग हो रही थी उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई है, जिसको हमने रिकॉर्ड भी किया, तो वो भी आपको दिखाएंगे। बट बिफोर एनीथिंग एल्स, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मुमासलत खींची कि जी दोनों के हालात, वाक़यात, मामलात बहुत सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, दोनों में मुमासलत है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब 2020 के इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस के नताइज को मानने से इनकार कर दिया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट द राइट चॉइस फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके फड्डे शड्डे इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। तो एक तो ये मुमासलत उन्होंने कहा जी कि खान साहब का भी फड्डा इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप का भी अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा है। दूसरा मुमासलत ये कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बहुत सारे केसेस बनाए गए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उसने खुद कई दफ़ा कहा कि मेरे खिलाफ जो केसेस बनाए गए, इस तरह बनाना रिपब्लिक्स में केसेस बनाए जाते हैं। और फिर एक कन्विक्शन भी हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो इससे भी मुमासलत खींची जाती है। और फिर तीसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई पेंसिल्वेनिया में वाइल ही वाज एड्रेसिंग अ रैली, और एक गोली उसके कान को छूती हुई गुजर गई और वो ज़ख्मी भी हुआ। और इमरान खान साहब के ऊपर भी असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई और उनकी टांग पे गोलियां लगी। तो ये मुमासलत खींची जाती है। अब यहाँ तक वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का जो एक क्रैक डाउन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जिस लेवल पे और जिस शिद्दत और हिद्दत के साथ और जिस इंटेंसिटी पे और सिस्टम और कानून का भट्टा बिठा के और इदारों को तबाह करके और मेरिटोक्रेसी का कत्ल करके इमरान खान के साथ किया गया है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसके अशरे अशीर भी नहीं है। दोनों में बहुत फ़र्क है। इमरान खान 1 साल से ऊपर जेल में बैठा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्शन के बावजूद जेल के दरवाजे के अंदर भी नहीं गए। तो दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की देयर इज़ अ सर्टन वे दे एक्ट, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो शुतर बेमुहार है, उसको तो कोई रोकने, पूछने, टोकने वाला है ही नहीं। तो इस वजह से किसी किस्म का इस लेवल पे कंपैरिजन है। दूसरी बात जो है, जो बिल्कुल कोई कंपैरिजन अमेरिका और पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता, वो है इलेक्शन। मैं आपसे अर्ज करूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहे और ये कोई बात मान भी ले कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने केसेस बनवाए, इस्टेब्लिशमेंट ने कन्विक्शन करवाई, इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी और उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ, अगर कोई ये नैरेटिव प्रेजेंट भी करे, तो उसके बावजूद अगर ये किसी ने किया भी, कोई पावर सर्कल्स के लोग नहीं भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते थे, मीडिया पसंद नहीं करता था, लेकिन उस नापसंदीदगी के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिकन इलेक्शन की फेयरनेस, उसकी ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस में इंटरफेयर करे। जुर्रत नहीं हुई किसी की। जिस तरह मैंने आज अमेरिका में इलेक्शन होते हुए देखा है, मैं तो
यकीन करें हैरान हुआ हूँ। और मैं ये वीडियो अभी आप थोड़ी देर में जो देखेंगे, वन ऑफ द पोलिंग स्टेशंस, वहाँ पे जो चीफ ऑफिसर था उससे मेरी गुफ्तगू जब हुई है, मैंने उसे कहा, मैं कहा पोलिंग हो रही है, ये मतलब कि ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई पुलिस और फौज तो बिल्कुल भी तैनात नहीं थी वहां पे। तो मैंने उसे कहा, भाई कोई लड़ाई, कोई फड्डा, कोई फाइट, कोई मसला? कहता नहीं। मैंने कहा कोई इशू? कहता नहीं। मैंने कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? कहता नहीं। मैंने कहा कोई सिक्योरिटी की जरूरत है? कहता नहीं। मैंने कहा पुलिस की जरूरत है? कहता नहीं। मैंने कहा फौज भी तैनात नहीं हुई? हमारा इलेक्शन तो फौज की तैनाती के बगैर पॉसिबल इन। एंड आई टेल यू व्हाट, आई रिमेंबर 2018 के इलेक्शन में जब वो आरटीएस बैठने की बात और उसके बाद फौज की तैनाती और उसके बाद गवर्नमेंट बन गई, साल डेढ़ 2 साल, आई रिमेंबर कि मैं आईएसपीआर के ऑफिस में डीजी आईएसपीआर से मेरी मुलाकात हुई उस टाइम पे जो थे। तो उन्होंने कहा जी फौज ने तो फैसला कर लिया है कि फौज अब आइंदा कभी इलेक्शन के करीब भी नहीं जाएगी, क्योंकि देखें नवाज शरीफ वगैरह, पीएमएलएन वगैरह हारे खुद हैं, अपनी वजह से हारे हैं, अपनी बुरी परफॉर्मेंस के, और मुद्दा सारा हमारे ऊपर फौज के ऊपर डाल दिया कि फौज ने हरवाया, फौज ने आरटीएस बिठाया। लेकिन फिर जो 2000 ये इलेक्शन में किया है बाद में, उसके बाद जो कुछ हुआ है 2022, सॉरी ये अभी जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, जिस तरह से इलेक्शन हुआ है फरवरी 2024 का इलेक्शन, हाँ, तो उसमें जो कुछ किया है, जिस तरह से किया, वो आप सबको पता है कि फौज क्या करीब नहीं गई, क्या पोलिंग स्टेट, मतलब कि पाकिस्तान में तो हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट फौज को वहाँ पे लगा देती है ना, और इन द नेम ऑफ कि जी सिविल गवर्नमेंट ये चाहती है और ऐसा करे, वो सिविल गवर्नमेंट बाहर भी उठाती है क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट में रह नहीं सकते। बहरहाल सर, इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतना सुकून, इतना मेरिट इलेक्शन में, कोई खप नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो बंदा आगे से हंसा भी, और मैं भी हंस रहा था उससे बात करते हुए, जब मैं उसे पूछ रहा था कि यार कोई तुम लोगों को फौज नहीं चाहिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, तुम लोगों को पुलिस कोई नहीं चाहिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए? तो ये थोड़ी देर में आप वो वीडियो देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। तो ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं पाकिस्तान और अमेरिका का इस हवाले से। मतलब कि एक जो वोटर है उसकी अमानत में खयानत करने की जुर्रत किसी की नहीं है यहाँ पे, जो मर्जी हो जाए। ट्रंप जितना भी नापसंदीदा था इस्टेब्लिशमेंट का, पावर सर्कल्स का, उसके बावजूद अगर अमेरिका की अक्सरियती अवाम ने फैसला कर लिया दैट ही इज गोइंग टू बी आवर प्रेसिडेंट, ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। एंड व्हाट अ पॉलिटिकल कमबैक। और खुद ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी कहा है, और ये अमेरिका की तारीख में 250 साल में दूसरा बंदा है जो इलेक्शन हारने के बाद, पिछला इलेक्शन जो बाइडेन से हारने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, और ये दोबारा खड़ा हुआ है। नहीं तो जो बंदा एक दफ़ा इलेक्शन हार जाता है उसके बाद वो दोबारा प्रेसिडेंसी के लिए कंटेस्ट नहीं करता एज अ मैटर ऑफ कस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये दूसरा बंदा है। इससे पहले पता नहीं 1800 समथिंग अर्ली उसमें था, मुझे उसका नाम नहीं है याद प्रेसिडेंट का, वो एक था, और दूसरा ये ट्रंप है। और इसका जिक्र ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी किया। अब ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है जी कि एक तो अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और ट्रंप ने अपनी स्पीच ख़त्म की है, तो जो इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के हैं वो 266 के मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कैमला हैरिस के 194 194 के करीब रिपोर्ट हो रहे हैं। सो 270 जो कर लेता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ट्रंप इज़ ओनली 4 वोट्स बिहाइंड इट एज आई स्पीक टू यू राइट नाउ। और ट्रंप ने प्रिडिक्शन अपनी स्पीच में ये किया है कि जो उसका अंदाज़ा है उसको सामने रखते हुए वो ये कह रहा है कि हम 315 के फिगर को टच करेंगे, तो 270 पे आप अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाते हैं। बहरहाल अपनी स्पीच में जब ट्रंप वहाँ पर आया, फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर्स में उसके सपोर्टर्स ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। उसके वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट वेंस जो है वो भी उसके साथ था, उसकी फैमिली भी थी, उसके कुछ दोस्त सपोर्टर्स भी थे। तो सबसे पहली बात उसने की कि वी विल हेल्प आवर कंट्री हील, यानी कि हम अपनी कंट्री को रिकवर करने में, हील करने में मदद करेंगे, और हम बॉर्डर्स को फिक्स करेंगे। बॉर्डर्स को, आपको पता है कि इलीगल इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ ट्रंप का बहुत एक नैरेटिव है जिसको बड़ी सपोर्ट मिली है। उसके बाद उसने बोला जी कि ये ऐसी पॉलिटिकल विक्ट्री अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखी है।
फिर उसने कहा कि आई विल फाइट फॉर यू, योर फैमिली एंड फ्यूचर। मैं आपके लिए, आपके घर वालों के लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ूंगा। ये अमेरिका की एक गोल्डन एज होगी। मैं अमेरिका को दोबारा, हम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे, अजीम तर बनाएंगे। और फिर उसने 315 इलेक्टोरल वोट्स की अपनी जो प्रेडिक्शन है वो भी दी। फिर उसने ये भी बताया कि सेनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी जीत गई है। अभी तक डेमोक्रेट पार्टी जो थी उसकी मेजॉरिटी थी सेनेट में, लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी होगी। और साथ फिर ट्रंप ने ये भी बोला कि ये भी लग रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन्स की ही मेजॉरिटी रहेगी। उसके बाद ट्रंप ने अपने मरहूम वालिद को याद किया और अपनी मरहूम सास को याद किया, और ख़ास तौर पे सास की बड़ी तारीफ़ की अपनी बेगम की तरफ देखते हुए। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट का ट्रंप के कैंडिडेट थे उसको मुबारकबाद दी। ट्रंप ने उसको बुलाया, वो वहाँ पर 1-2 मिनट के लिए बोले आके, और उन्होंने कहा कि ये ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल कमबैक है इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। और फिर उसने बोला कि ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक कमबैक भी होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद ट्रंप ने एलन मस्क, टेस्ला का जो मालिक है, द वेल्दीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ, स्पेस एक्स का जो मालिक है, उसने बड़ा सपोर्ट किया ट्रंप को, और रैलीज के अंदर $1-1 मिलियन के चेक्स भी वो बांटता रहा है, ऐसे ही वो फाल निकाल के, कुरा निकाल के। तो उसने एलन मस्क की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और उसके बाद फिर यूएस ओपन चैम्पियन एक वहाँ पे टेनिस का था, उसको उसने बुलवाया स्टेज पे, उसकी तारीफ़ की। उसके बाद यूएफसी फाइटर एक था, उसको उसकी तारीफ़ की। कुछ अपने जो उसकी कैंपेन कर रहे थे ट्रंप की, उनकी तारीफ़ की। उसके बाद ट्रंप साहब ने तमाम अमेरिकन्स का शुक्रिया अदा किया, और उसमें स्पेसिफिकली बोला सारे अमेरिकन्स, और फिर टर्म्स बोली एशियन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन, और ख़ास तौर पे जो टर्म मैं सुनना चाह रहा था वो बोली ट्रंप ने, उसने कहा मुस्लिम अमेरिकन्स, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद उसने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि गॉड स्पेयर्ड माई लाइफ फॉर अ रीज़न, यानी कि खुदा ने मेरी जो जान बख्शी की है, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट से मैं सर्वाइव किया हूँ, वो किसी वजह से की है। और वो वजह ये है कि मुझे अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है। आई हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके बाद ट्रंप ने ये भी कहा कि ये जो पिछले 4 साल से डिवीज़न है हमारी सोसाइटी में, ये ख़त्म होनी चाहिए, और अब हमारे मुत्तहिद होने का वक्त है। और उसके बाद उसने सबका शुक्रिया अदा किया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक स्पीच की है। एज आई स्पीक टू यू, मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री स्पीच एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर चुके हैं। जनवरी में अब ही इज़ गोइंग टू टेक द ओथ। ये ट्रांजिशन पीरियड अब होगा 5 नवंबर से लेके जनवरी अर्ली तक। और उसके बाद मशहूर जगह वो जो लिंकन मेमोरियल है, वहाँ पे प्रेसिडेंसी का ओथ उठाया जाता है, और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जब वो ओथ उठाएंगे। और इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उसमें गो के अभी 270 का फिगर मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया था, 266 पर था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच कर दी है, और कैमला हैरिस से काफ़ी उनकी लीड थी। तो इस व्लॉग में ये कुछ डिटेल्स, और बहुत सारी स्विंग स्टेट्स जो हैं वो उन्होंने फैसला डोनाल्ड ट्रंप के हक में दिया है। वो 6-7 स्टेट्स जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी डेमोक्रेट कभी रिपब्लिकन, इस बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को। और उसकी वजह यह है कि एक तो जो बाइडेन की परफॉर्मेंस से लोग मुतमिन नहीं थे, उसके बाद डेमोक्रेट्स की जो स्ट्रेटजी थी इलेक्शन को लेकर वो भी फ्लॉड थी। पहले बाइडेन को लॉन्च किया, फिर एक प्रेसिडेंशियल डिबेट बाइडेन के साथ ट्रंप की हो गई, तो उसके बाद फैसला करके उसको विड्रॉ करवाया और कैमला हैरिस को लेकर आए। फिर कैमला हैरिस के पास टाइम कम था। फिर जो इज़राइल और फ़लस्तीन की वॉर है जिसमें गज़ा में बमबारी में 40,000 मासूम शहरी जो हैं और बच्चे जो हैं उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसकी वजह से डेमोक्रेट्स अनपॉपुलर थे। और ओवरसीज़ जितना पाकिस्तानी है मैं जानता हूँ, हालांकि लोग ज़ाती तौर पे डेमोक्रेट्स को, यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं वो डेमोक्रेट्स को ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से उनकी जो नैरेटिव है वो काफ़ी सॉफ्ट है, और ट्रंप बहुत इसके ऊपर स्ट्रिक्ट है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस बार जितना देसी था यहाँ पे अमेरिका में, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, मैंने तकरीबन सबको डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए और यही सुना है कि जी हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेट पार्टी है
इसकी तो बिल्कुल मतलब कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं थी इमरान खान के साथ। और कुछ लोग तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक अहम किरदार अदा कर सकता है इमरान खान साहब की रिलीज के हवाले से, और अगर नहीं तो कम से कम कम्युनिकेशन तो थी इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस वजह से लोगों ने खान साहब के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर तरीके से सपोर्ट भी किया है और वोट भी किया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये जीत मिली है। और अब आगे देखना ये है कि ट्रंप इस जीत को आगे लेकर कैसे चलते हैं और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात क्या होने जा रहे हैं, और आया कि इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप कोई दिलचस्पी लेंगे, इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात होगी, ये आने वाले वीलॉग्स में हम डिस्कस करते रहेंगे। सो नाउ आई विल टेक यू टू द वीडियो जो मैंने आज बनाई है, और उसमें आप देखें कि अमेरिका में इलेक्शन का कैसा माहौल होता है और पाकिस्तान के इलेक्शन से अमेरिका का इलेक्शन किस तरह से कितना मुख्तलिफ है। और वो जो चीफ़ ऑफिसर्स हैं उनसे जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों कोई सिक्योरिटी आपको नहीं चाहिए, तो क्या जवाब दे रहे हैं। ओवर टू द वीडियो। Hello, happy voting day. Hello. Just need to have your ID out and we can check you right in there. ये हम पोलिंग स्टेशन के अंदर आ गए। एक बोरिंग किस्म का सुकून आप देख रहे होंगे, और ये अंदर इधर पोलिंग हो रही है इस वक्त। कोई रश नहीं है, कोई खप नहीं है, किसी किस्म का कोई रौला है ही नहीं। पोलिंग स्टेशन बाकी का भी दिखा देते हैं, जरा अंदर से भी दिखा दें। पोलिंग स्टेशन ऐसे ही जाते जाते दिखा दें। तो वो आपने देखा वहाँ पे पोलिंग स्टेशन जो है अंदर से कितना पुरसकून है, कोई रश नहीं, कोई खप नहीं, कोई रौला नहीं, कोई लाइनें नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धांधली के इल्ज़ामात नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इत्तफाक है इस बात पे कि पुरसकून तरीके से। Remember you from last year? Oh, do you? I think so. Yeah, I was Can't here. forget that face. Fill it out. Fill in the voting form. We're voting for. Or Once they get done with that, they come over here. And they turn it into the machine. And that's where they stick their vote in. okay. Just right in here. And this will tabulate it. All right. So this is the voting machine. Correct. But this is a paper vote? Yep. All right. So all the papers go in there. Okay. And it's gonna count. And at the end of the day, this is what tells us how many votes were cast for whoever. I see. Wonderful. And all the paper ballots So what are still in this, there. what area this polling station is covering? How many registered voters in this area? Just under 900. Under 900. Yeah. And how many votes have been cast so far? So far, just over 200. And the voting ends at 6 o'clock. No, 7. 7. We start at 6. We end at 7. Thank you. ये दूसरा पोलिंग स्टेशन है जिस पर मैं आपको लेकर आया हूँ, और यहाँ ये मस्जिद है बेसिकली, और मस्जिद के अंदर भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया। तो इधर भी वोटिंग हो रही है, ये भी ज़रा आपको दिखा देते हैं आज।
ये अलहदा से इन्होंने यहाँ पर एक स्पॉट बनाया हुआ है फॉर पीपल जो कि जिन्हें किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप, वो स्पेशली इधर आते हैं। हालांकि वो दूसरी जगह भी बिल्कुल मतलब कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रश नहीं है किसी किस्म का, लेकिन फिर भी हर जगह पे हमको अलग से बात करनी चाहिए। जी, तो हम एक दूसरे पोलिंग स्टेशन पर हैं और यहाँ के जो चीफ ऑफिसर हैं वो हमारे साथ हैं। हाउ आर यू चीफ? Doing very good, thank you. How is the polling going? Well, with the warm weather, a lot of people are coming out. All right. How many registered voters for this polling station? We have about 3,600 registered voters for this precinct, and about 41% voted before today. And as of, we opened up at 6 o'clock in the morning, so now it's around, let's see, 6, 7, 8, 9, about 9 hours later, we have, I think it's just about 650 people have voted here. So everything going fine? It's going fine. Any problem, any issues? No issues at all. I think the warm weather is bringing the people out. No fights? No fights. No law and order situation? Nothing. No excitement. I don't see a security guard at all outside any polling station. No police. Also. Not required? Not required. Not required. What about the army? Is that also not required for the polling That's station? correct. That's correct. It's fairly peaceful. Usually there's some isolated instances because somebody gets their feelings hurt. But it's fairly peaceful. So can we make a little bit of video from inside the polling station? Of course. The only thing we have to keep in mind is Yeah. we can't show anybody voting on the ballots. Okay. We get to rattling. You can. Yes, please. Thank you. Thanks. Have a good one. You too. And if we're going to show any of the people voting, we just need to get their permission to make sure it's okay. So we'll just follow you. Okay. And you can tell us that how the voting process takes place. Got it. So let's try not to film him. Okay. उधर film नहीं करना वो उस बंदे को. So these are all the voters. You tell by when the workers, you tell by the black shirts. Okay. It's pretty much a volunteer. They get a small stipend, Okay. and they're here about 16 hours. 16 hours. 16 hours. So when the voter comes, he has to show his ID here. So the process is, the voter comes in here, and he has to show a photo ID. They check in the book to see if the person is previously registered to vote. If they are registered to vote at this precinct, but they can't vote here if their address is somewhere else. So if they vote here, they're in the poll book, they get a ballot, they fill it out in privacy, they put it in the scanner and vote. So this is the place they fill it in. That's correct. In And privacy. you can fill this out here, because that's how they have to fill it out. ये दिखा सकते हैं हम यहाँ पे वोटर बैठ के अपना वोट जो है वो फॉर्म भर रहा होता है किसको वोट करना। Alright. And the other thing to see is, when the people are coming in, here's a sample ballot of what they're going to see when they get a full ballot. So this is their sample ballot. Alright. For ये sample ballot है वोटर इसको fill in करता है for president and vice president, right? Well, president and vice president are the same ticket. Okay. And then there's other offices that are also running. And then at the end, there is a proposed constitutional amendment for the Virginia Constitution. Okay. And I can give you this, you can take it with you. Okay. This talks about the proposed amendment. Basically what this says is, if a service member, military member, dies in combat, their spouse gets tax relief. But if a military member dies in training or something else that's not related to combat, nothing happens to their family for tax relief. And they're saying, do you want to change it to say any service member dies? Okay. And so any voter who's coming here, he is casting the vote for the president and the vice president and plus for the member in the Congress. correct. Yes, the House of Representatives and the Senate. So there are 4 different people that that the candidate has to cast vote for. They have the option to vote for all of them, the option to vote for none of them. They also have the option to write in somebody else's name.
So they can vote for one, they can vote for all of it. All right, thank you very much. You're doing a great job. Thank you so much. Thank you very much. And the other thing to note, for election integrity is very important. Yeah. So the two primary parties, Democrat and Republican, of the chief and the assistant chief, we have to be from two different parties. So one has to be Democrat, one has to be Republican. So who do you represent? Republican. All right. And then if somebody comes in and they check their ID, if they're not registered for this place, we have a list and says, here's where you're I registered. have another question. For example, you've been selected as chief for this polling station. Correct. So are you a government officer, or are you working for the government, or are you just a civilian who's just been hired for the service by the election commission? We're all volunteers, and anybody, you can do it, anybody who's a registered voter in Virginia can volunteer at the precinct. It's a long day, 16 hours. You get a small stipend. But for example, you are acting as, can we come outside? For example, I just got a For example, you the chief officer for this polling station. If there's somebody else who's interested to become the chief officer, then there are two people interested for the same post, then what happens? How do they select? Well, they volunteer to come here as a worker, and after years of experience, then you get promoted up the chain. Okay. So when there's a vacancy, a new person comes in as chief. So these are all volunteers. All volunteers. There's a small stipend, like about $250 for the entire day. Okay. And my question is that, but somebody has to supervise the activity. I mean, I understand the volunteers are doing this, but is there a member of the election commission or some government representative who's also here right now? Right now, the chief is the one that's in charge. Okay. And who do you report? Who do you have to report? I report nobody in particular. I just report all the ballots, all the rules, according to the laws of Virginia, report them in. I have assistants at headquarters if I need help on certain issues. And I get training, lots of training, before every election. We have a special assistant, which was a former chief, that visits around 15 precincts to make sure everything's done right. And the counting is also going to be done by the same volunteers? Correct. Results will be finalized by them? Correct. And then you'll hand over the result to whom? I report them into the headquarters office. Okay. They then report it to the television stations. So it's all electronic. It goes right to the television stations. And then... Have you ever come across an instance when two candidates, for example, representing two different parties, the Republicans or the Democrats, they have an issue or a conflict about the counting of votes? What happens then? If there's any issues, that would happen after the polling, everything's done. So we report the initial findings. If something is wrong, tomorrow they do a thing called ascertainment, where they make sure that the votes that were counted match what was reported. Because we can transpose numbers, we can make some errors. So they have somebody that double checks it tomorrow, and then they double check it on Friday. So you've also covered other elections in the past also? I've been doing elections for about 20 years. 20 years. So in these 20 years, have you ever come across an incident where a fight took place or in a polling station or something like that, a conflict, something? Never. Never? Never. It'd be exciting if there was, but it's never happened. It would be exciting. It would be exciting. But that's never happened. कह रहे हैं जी कि कभी हुई नहीं लड़ाई 20 साल हो गए हैं इलेक्शन कवर करते लेकिन कभी फटा ही कोई नहीं हुआ So I've got a question for you. Yeah. You know that the number of people who vote, the people don't elect the president. Yeah. What happens goes to the electoral college, and each state has so many votes, and whoever gets 270 becomes the president. Yeah. So here's the question: what happens if two candidates and neither one gets 270 votes? If neither one got 270 votes, then the House of Representatives in Congress, they vote who becomes the president. And then the Senate votes who will be the vice president. Yeah. So it's possible that
One will be Democrat, one will be Republican. If it ever got to if nobody gets 270. if nobody gets to 7. That's never happened before. So your name is? Bruce, Bruce. Yes. Bruce, thank you very much. You've been very kind. thanks to for us. coming out and showing the interest. Enjoyed the conversation. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. I want to show you one more thing. Yeah, sure. Over here, this machine right here is a scanner, and you can film this because there's nobody here. So what they do is, when somebody fills out a ballot, they mark it, when we saw the sample ballot, they put it in here, it records the ballot. So it's going to print me out a tape just like this, and you can film this. This is all the different things they could vote for. Right now, they're all 0. At the end of the night, it's going to have a number for all of them. I report those numbers up to the headquarters. If there's a question that says, we want to make sure it's correct, every ballot in here has a paper ballot, so they could match them to the machine, to the ballots. And the paper can match every single one. All right. Okay, thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you so Take much. care. इस व्लॉग में इतना ही. अल्लाह हाफिज़.